Please start. It gives me great pleasure to introduce our distinguished final speaker on this session on Mastering Research Guidelines. We are honored to have with us Dr. Afifa Kulsoom, the Associate Professor of Community Medicine, founder and CEO of SALT, and faculty in charge of the Ravalian Student Research Society. She has been deeply involved in advancing medical education, research training, and community health initiatives. Her leadership has guided countless students and professionals in their academic journeys. We are truly grateful to have her expertise with us today. Please join me in welcoming Professor Dr. Fifa Kulsoom to deliver her session on mastering research guidelines from design to reporting. Over to you, ma'am. Thank you so much, Haris, for your kind words. Are we expecting more participants? के हम start करें? Most of the participants are watching live from the YouTube live stream directly. These are only the presenters who are yet joining. ठीक है. So, Assalamu alaikum, everyone. I'm Dr. Afifa Kulsoom. I'm Ara Valian, and I'm working at Rawalpindi Medical University for the last 15 years, and I'm proud to be serving my alma mater. So, I've done my fellowship in public health and community medicine, and currently I am doing my PhD in public health. I am also the faculty in charge of Ravalian Students Research Society, and there is another initiative that I am running, the name of SALT, Social Alliance for Learning and Training. We are on YouTube, Instagram, and Facebook, and you can follow us there. And if you want to reach me out for any initiative, you can contact me on my given email address. So today, I would be taking you through all the guidelines of different designs, study designs. And अभी आप जैसे जैसे ये presentation आगे जाएगी, please don't feel overwhelmed कि ये हर different study design के लिए एक अलग सी guideline है जो follow करनी है और हम ये कैसे करेंगे. Believe me, it's not that difficult. अगर आपकी methodology robust है, आपका study design ठीक है, or guidelines will not overwhelm you, they will help you to streamline and ultimately report your study. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. These are all the learning objectives we will be covering today. You would be able to differentiate between various types of research designs. You will not be able to master different types of research designs because this is out of scope for today's session. But आपको different types of study designs का initial knowledge जरूरी है to understand different guidelines. Then I'll be taking you through all the guidelines, and I'll be also telling you the ethical considerations and regulatory requirements that underpin each type of the research. You would be able to apply appropriate guideline checklists to evaluate the quality and rigor of published studies. अगर आप कोई critique कर रहे हैं, आप जैसे आप journal clubs करते हैं, तो उसमें भी ये knowledge आपको help करेगी. You would be able to select suitable reporting guideline when planning your own research projects, and you will be able to critically appraise the strengths and limitations of guidelines for different research methodologies, and ultimately integrate guideline-based approaches into your proposal writing, data collection, analysis, and finally reporting. So you all know that basically there are two paradigms of research. One is qualitative, one is quantitative. In qualitative research, we answer the why of a question. It is observation based. We observe, we record, we interpret, and we group the common data. And basically, it is non-statistical analysis. But in quantitative paradigm, we answer the how many and much of such questions, numerical. We have statistical results. We measure, we test, and we apply statistical analysis. And then there is mixed methods research, which integrates both the quantitative
that is the numbers and measurements, and the qualitative, which means the words and experiences within a single study. And it provides a more complete understanding of the complex questions by combining statistical trends with personal insights. So we use both numerical as well as narrative data. And it can be sequential, like one follows the other. जैसे यानी आप पहले क्वांटिटेटिव कर लें फिर क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव फॉलोड बाय क्वांटिटेटिव, और इट कैन बी कंकरेंट दैट both the type of data is collected together. And it strengthens the validity by triangulating findings and bridges the what with the why. And then we have operational or implementation research. It applies different scientific methods to the real world settings to improve the performance of programs, systems, or policies. Focuses on solving practical problems and improving efficiency, ensuring interventions work in practice, not just in theory. So actually, it is translation of research into action because it is conducted in real world context, not the controlled labs, and it addresses barriers to implementation. And ultimately, the aim is to optimize programs, services, or policies. So these are different guidelines that you can choose according to the research type. For randomized controlled trials, we use the consort guidelines, consolidated standards of reporting trials, and the purpose is to improve clarity and completeness of the clinical trial reporting, यानी कुछ miss ना हो जाए. STOPE guidelines, the strengthening the reporting of observational studies in epidemiology, they are used for observational studies like cohort, case control, and cross-sectional studies. PRISMA guidelines, systematic reviews and meta-analysis के लिए use होती हैं. Then we have two for qualitative researches, CORIC, consolidated criteria for reporting qualitative research, and the SRQR standards for reporting qualitative research. Different ethical considerations. और अच्छा, ये जो आपको मैंने अभी गाइडलाइंस बताई हैं, I'll take you to इक्वेटर वेबसाइट और वहां पे फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ. एथिकल कंसिडरेशंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इन गाइडलाइंस के लिए. देखें, क्वांटिटेटिव जैसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं उसमें इन्फॉर्म कंसेंट इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेंट सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, रिस्क बेनिफिट बैलेंस इंपॉर्टेंट है. अब ये जितनी भी गाइडलाइंस है ना, ये आपकी उन एथिकल कंसिडरेशन, क्योंकि चेकलिस्ट है ना, तो आपको अगर आप कुछ मिस भी कर रहे हैं लाइक क्वांटिटेटिव स्टडी में इस तरह की कंसेंट रिलेटेड, रिस्क बेनिफिट रिलेटेड इशू, या क्वालिटेटिव में प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी इन सेंसिटिव डिस्कशंस, इस तरह के इशू, कल्चरल सेंसिटिविटीज, कॉन्फिडेंशियलिटीज, और मिक्स्ड मेथड्स में जैसे आप इनके दोनों के कंबाइंड चैलेंजेस हैं, सर्विस का भी और इंटरव्यूज का भी, तो वो सब इसमें एड्रेस हो जाती हैं. So how you can apply the guideline checklist for research quality? As I told you, consort आपने randomized control trials के लेनी है, और ये STROBE, PRISMA, CORIC, whichever the study design is. First you identify your study type. मतलब RCT है तो उसमें के लिए आप consort यूज करेंगे, observational है तो उसके लिए again उसके लिए आप STROBE यूज करेंगे, अगर systematic review या meta analysis कर रहे हैं तो prisma use करेंगे, and so on. Then you select the correct checklist and then you review the checklist items like title है, abstract है, methods हैं, results हैं, discussion है, and then you score your compliance के either you have included a particular aspect of title or not, you yes, partial or no. अगर yes है तो कोई issue नहीं है, partial या no है तो you try to improve upon that. Then you note the gaps and limitations in reporting as indicated in the checklist, and you judge your overall quality and rigor before using the study as evidence. So there are certain strengths and limitations of research reporting guidelines. Strengths ये हैं कि it ensures completeness of reporting. It enhances the transparency and reproducibility. अगर आपने एक गाइडलाइन कंप्लीटली फॉलो की है और आपने उसको मेंशन भी किया है तो आपको उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेगा. इट इम्प्रूव्स कंपेरेबिलिटी अक्रॉस द स्टडीज, बिकॉज अगर एक स्टडी है जिसकी कंप्लीट उसने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की हुई हैं, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड with the
other study जिसने guidelines follow की. So it improves at comparability. It facilitates peer review and publication acceptance, and it also serves as a teaching and planning tool for new researchers. जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी चीजें यू लर्न विद योर एक्सपीरियंस. और चेकलिस्ट आपको वो फैसिलिटेशन दे देती है कि जो उस पे रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यू डोंट मिस अपॉन एनीथिंग. बट having said that, these research reporting guidelines have their inherent limitations also. They are not suitable for good methodology. I mean, they are not a substitute for good methodology. अगर आपकी methodology ठीक नहीं है तो वो उसके flaws को ओवरकम करने के लिए नहीं है. ठीक है, दे ओनली चेक रिपोर्टिंग, दे डू नॉट चेक द स्टडी क्वालिटी. अच्छा, देन रिजिड एप्लीकेशन में इग्नोर कंटेक्चुअल डिफरेंसेस. लाइक आप उसमें उसको एक बाज दफा ये होता है कि आप रिजिडली जब उसको अप्लाई करते हैं तो आप कल्चरल सेटिंग्स को और कंटेक्चुअल डिफरेंसेस को ओवरलुक कर देते हैं, स्पेशली इन क्वालिटेटिव रिसर्च. And since science is an evolving thing, guidelines may not cover the new and innovative methods. And journals and reviewers may apply them. Sometimes they may apply them inconsistently. So, how you can integrate uh, your guidelines into your research? Firstly, आप proposal writing में checklist को use करिए to ensure the clarity in study design, and also to define objectives, methods, and outcomes according to these standards. Then during data collection, you can follow standardized methods required in the guidelines. For example, आपको eligibility criteria define करना है, data collection forms हैं, qualitative interview protocols, and so on. And ensure ethical and transparent handling of participants' data. Then during analysis, apply methods aligned with your reporting requirements. Like consort जो है, it requires reporting of your sample size calculations. वो आपने mention करनी है. CORIC requires transparency in coding and analysis. उसका आपने ख्याल रखना है. And document all steps of reproducibility. And during reporting, you can structure your manuscripts using appropriate checklists according to your study design. And you can enhance clarity as well as the credibility or journal acceptance. We are not finishing here. I want you to take you to Equator website. That is an excellent tool for all these guidelines. Can you all see my screen? I can't hear you. Anyone? We are only seeing the presentation, ma'am, not the screen. Not the screen? शेयर अगेन करें एंड शेयर फुल स्क्रीन कर दें तो दैट इट विल Okay. हो जाएगा. I think would I be able to share entire screen? आप क्योंकि कर रहे थे ना पहले. Can you see it now? Yes, ma'am. Can you see this Equator website? Yes, we can. अच्छा, okay. अच्छा, ये let me copy this link in the chat box so that you can all open it. आप लोग अपने अपने लैपटॉप्स पे इसको ओपन करें. So this is Equator stands for Enhancing the Quality and Transparency of Health Research, and this is an international network working for the past 15, I think more than 15 years. And it is an excellent resource for all kinds of guidelines. एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी.
अब ये देखें, आप इसके मेन पेज पे हैं एंड यू कैन सी ऑल दीज गाइडलाइंस। रैंडमाइज ट्रायल्स के लिए आपको कंसॉर्ट नजर आ रहा है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के लिए स्ट्रोब, सिस्टमैटिक रिव्यूज के लिए प्रिज्मा एंड सो ऑन। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, इफ यू आर नॉट श्योर विच रिपोर्टिंग गाइडलाइंस टू यूज, तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। इवन जो गाइडलाइंस इनकी अंडर डेवलपमेंट है, क्योंकि कुछ एक्सटेंशंस भी आ गए हैं, जैसे आप यहाँ देखें ना, ये कंसॉर्ट का है, लेकिन उसकी फर्दर एक्सटेंशंस भी आ चुकी हुई है, इसी तरह स्ट्रोब की आ चुकी हुई है। अगर आप कोई स्टडी प्रोटोकॉल पब्लिश कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप स्पिरिट गाइडलाइन, और ये उसकी एक्सटेंशन प्रिज्मा आ चुकी हुई है, ठीक है। केस रिपोर्ट्स की देखें गाइडलाइन है केयर, और उसकी एक्सटेंशन आ चुकी हुई है। तो आप यहाँ से इन सब टूल्स को यूज कर सकते हैं, जो अभी अंडर डेवलपमेंट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड दिस इज द लाइब्रेरी फॉर मोर रिसोर्सेज। अच्छा, अब आप ये देखें, आप इसको फर्दर स्क्रॉल डाउन करें तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज टूल किट्स, जिसमें इवन राइटिंग रिसर्च है, peer reviewing research है, how to use guidelines in your journal, and how to develop a reporting guideline also, if somebody is interested in working in this area. This is a very promising area to work with. अच्छा जी, फर्दर ऑन इसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि ये, आप इसके न्यूज़लेटर को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये इनका ब्लॉग है, इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपको मिलती रहेंगी आपके ईमेल में। ये न्यूज़लेटर्स हैं, ठीक है, ये आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे दे दें तो इसके न्यूज़लेटर्स आपको मिलते रहेंगे। नाउ हेयर, इवन इन कोर्सेज एंड इवेंट्स आपको बहुत सारा फ्री रिसोर्स मिल जाएगा। ये सारे अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं इनके, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड एनी रेलेवेंट कोर्स फ्रॉम हेयर। ये वर्कशॉप, सेमिनार्स, लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये कोर्सेज और वर्कशॉप्स पड़ी हुई हैं, ऑल पास्ट इवेंट्स का सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एंड इट इज एन एक्सीलेंट रिसोर्स इफ यू वांट टू अपग्रेड योर नॉलेज। यहाँ टूल किट्स में अगर आप आ जाएं, ये ये देखिए, ये लाइब्रेरी इंडेक्स है। इवन इफ you want to know more about what is a reporting guideline, you can search for reporting guidelines here, you can browse here, and ये पूरा मैनुअल पड़ा हुआ है यहाँ पे। And coming to library section, so this is an up to date collection of all the guidelines and policy documents. इसमें आप देखें, ये you also get professional medical writing support if you want to, research ethics, publication ethics, and good practice guidelines भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सो दिस इज वन वेबसाइट जिसको मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि यू ऑल बीइंग बडिंग रिसर्चर्स, आप इसको यूज करें। एंड इवन इफ यू नीड ट्रांसलेशंस इन डिफरेंट, कोई आपको टूल है जिसकी ट्रांसलेशन आपको चाहिए, वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। अच्छा, लेट मी ओपन दिस वन गाइडलाइन फॉर यू here. तो दिस इज कंसॉर्ट 2025 स्टेटमेंट, देखें लेटेस्ट अपडेट है इसकी, अब गाइडलाइन फॉर रिपोर्टिंग रैंडमाइज ट्रायल्स। ये चेकलिस्ट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करें।
ये देखें। अब देखें टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट में वो आपको बता रहा है कि आपने ये मेंशन किया है, आइडेंटिफिकेशन एज ए रैंडमाइज्ड ट्रायल, स्ट्रक्चर्ड समरी ऑफ द ट्रायल डिजाइन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स आपने दिए कि नहीं दिए इन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर ट्रायल रजिस्ट्रेशन, प्रोटोकॉल एंड स्टेटिस्टिकल, सारा कंप्लीट प्लान है आपको। जब भी आप कोई भी लाइक ऑब्जर्वेशन स्टडी है या इवन आपका आरसीटी है और आप प्लान कर रहे हैं उसको, उससे पहले आप इन गाइडलाइंस को जरूर पढ़ें। उसमें आपके बहुत सारे ऐसे इनहेरेंट फ्लॉज हैं जो आपके ओमिट हो जाएंगे अगर आपने इन पहले से ही इन गाइडलाइंस को पढ़ा हुआ होगा। तो दिस इज एन एक्सलेंट रिसोर्स। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी गाइडलाइंस की एक एक चीज बताऊं। मैंने आपको ये वेबसाइट बताई है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसको विजिट करें, इसको पढ़ें। अब ये फ्लो डायग्राम्स भी दी हुई है इवन। आप इसमें अपनी चीजें फिल इन करते जाएं। इसी तरह प्रिज्मा का फ्लो चार्ट दिया हुआ होता है, इट्स उसमें आप फिल इन करते जाते हैं। एंड इट इज एडिटेबल। ये वर्ड पे खोला हुआ है, आप इसमें अपनी जो भी आपका, जैसे अब ये जो भी आपने एक्सक्लूड किया जितना नंबर आया वो डाल दें, रैंडमाइज कौन सा किया वो डाल दें। एंड आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। आपको रिपोर्ट अल्टीमेटली जर्नल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। So highly recommended this. You should all be using this website and all these guidelines. और जब आप इसको इवन आप हम लोग यूजुअली आरसीटीज में इन गाइडलाइंस को रेफर करते हैं। और हम जब सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस करते हैं तब भी इन गाइडलाइंस को रेफर करते हैं। रेफ लेकिन हम अपनी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में इन गाइडलाइंस को रेफर नहीं करते क्योंकि हमने फॉलो नहीं की होती, हमने उनको देखा हुआ भी नहीं होता। उसमें भी जरूर साइट करें कि आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो भी करें और उसमें साइट भी करें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की गाइडलाइंस कि आपने फॉलो की नहीं है। एनी क्वेश्चंस? आई वुड लव टू हैव क्वेश्चंस। अच्छा मुझे ये बता दें कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दीज गाइडलाइंस अदर देन मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू? जी। आई थिंक आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट करने की पोजीशन में है या नहीं है फ्रॉम द Yeah, ऑल? they are entering the answers in the chat of the Zoom meeting as far as the participants are concerned. ओके ओके Uh, I guess I can allow them to unmute themselves. I have allowed the participants to unmute themselves. ओके। अच्छा स्ट्रोब यूज किए आपने फॉर क्रॉस सेक्शनल? ईशा मसूद कह रही है, वेरी नाइस। क्योंकि दिस इज क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हम लोग कॉमनली करते हैं और मेटा एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। अब ज्यादा ट्रेंड है, स्टूडेंट्स मेटा एनालिसिस और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज बहुत कॉमन कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपको एथिकल अप्रूवल्स नहीं चाहिए होते हैं। डेटा पड़ा होता है, आपने उसी को यूज करना होता है और एक ट्रेंड है बच्चों में, ज्यादा वो करते हैं, उसके लिए तो वो यूज करते हैं। लेकिन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के लिए हम गाइडलाइंस, स्टोप गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे होते ना, उनको मेंशन करते हैं अपने मैन्यूस्क्रिप्ट में। तो आप लोग उनको फॉलो भी करें और अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मेंशन भी करें और जो उसकी फ्लो डायग्राम है उसको भी जरूर बनाएं, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसका वो दें। तो इट विल टेक आपके पब्लिक अच्छे जर्नल में आपके पब्लिकेशन पोटेंशियल बहुत इंक्रीज हो जाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च। So if there are no more questions, so I think I would be concluding this session. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आप लोग सब सुबह से मसरूफ हैं एंड मैं नहीं चाहती कि आपका ज्यादा टाइम लूं।
ऑर्गेनाइजर्स भी थक चुके हैं। तो इंशाल्लाह सी यू ऑल इन द क्लोजिंग सेरेमनी। Assalamualaikum. Thank you so much, ma'am, for the guidance. And I feel that this is very important as far as the students are concerned, because these guidelines are necessary to improve. We can now say the Pakistani students on average are publishing their articles in impact factor journals, like having 1.1 or 1.5 journals, which is much improvement than a bit before. But as if we have to move towards higher impact factor journals, such as JAC or Journal of Clinical Oncology, or higher journals having more than 50 or New England Journal of Medicine, etc., we have to follow these guidelines. So definitely your session was extremely valuable and extremely helpful for all the students. And I hope all the students will use this in future as they publish their researches. Thank you so much, ma'am. It was a pleasure. Thank you. Okay, ma'am, now next I would like to share my screen. Everyone. So first of all, this is not a proper closing ceremony. We will have the proper closing ceremony later on. Inshallah, the dates will be conveyed to you, and that will be physical one at the new teaching block of Rawalpindi Medical University. Is my voice clear to all of you? Okay, great. The noise is clear. So I would now like to humbly announce the positions. Before I announce the positions, there is one thing I would like to say. First of all, I'm extremely grateful to all the honorable judges for their time and for their effort they put for us students. I am extremely grateful to the honorable speakers who gave such valuable insights in different aspects of research as well as medicine as a profession. I'm extremely grateful to all the presenters from Pakistan, from Saudi, from Sudan, as all of you have taken out time out of your busy schedules as well for this particular conference. I'm lastly extremely grateful for all the participants who are listening, whether they are listening from Pakistan or outside Pakistan. Uh, Without any further ado, I would like to say that each and every person who has presented something today, or even has just joined and listened to the research to the conference, have gained something from this and is a winner in our side. Why he is a winner in our side? Because you are contributing something to the medical literature and something to the research culture within Pakistan or outside Pakistan, especially at the undergraduate level. So we are always extremely grateful, and because this always coincides with our motto, which is make student research easier. That is the motto of Rawal Student Research Society. So let me just show you the results, and I hope this causes for celebration for many of you. While those who did not get to see their names, they don't you not need to be disheartened. Your research were very good. Your searches are very good, and you can always improve. The real reason for this conference is to improve your research, not to particularly have positions. This is just the tradition of a conference, that a tradition of a competition that we have to announce the results. So let's just move on. First of all, first position for the poster presentations for the original studies.
that were reviewed by Dr. Iwad Muhammad Ibadur Rahman. The position goes to the presenter Husna Irfan Talib, who presented from Saudi Arabia. First position in the poster presenters for the case reports and reviewers category presents to Sara Sharif and her co-presenter Iman Ali, who are from Pakistan. First position for the oral presentations belongs to Isha Masood and Muhammad Hanzala Masood, again from Pakistan. And lastly, second position, oral presentations belong to Muhammad Usman and Ali Abdul Basit, again from Pakistan. So congratulations to all five winners who achieved top positions in this research conference. And again, once again, congratulations to anyone who had his or her abstract presented at the conference. Again, I would like to remind you that all of your abstracts are being published in the Students Journal of Rawalpindi Medical College and in the 29th, volume 1 of the 29th edition. You can visit the SJMC website from the Rawalpindi Medical University website, of course, and we have also open call for publications of the 29th volume 2, 29th edition volume 2, so you can submit your manuscripts for that as well. Last but not least, before I conclude this conference, I would like to say RMU is organizing flood relief programs. Right now, as you can see, our country is in major need of our efforts. So the Rawalpindi Medical University is organizing medical camps as well as other supportive measures for the flood affectees, not only in northern areas but also in the southern Punjab where the floods are currently affecting. So please, if you have, I would like to humbly request all of you to donate. I will share this poster in the main conference group as well, so you guys can donate uh, and help us as we help our brothers and sisters who are not so lucky nowadays. Once again, thank you everyone for your attention and for making this conference a success. We will share feedback forms as well, so you guys can give your valuable feedback, and the uh, certificates will be dispersed in a few working days. Thank you so much, everyone, once again for all your time and your effort. And with that, let's close these conference. Thank you. Assalamu alaikum.